everyone. You're watching Cricket Next Time. Suramya Kaushik. Well, what a match. Afghanistan team has defeated the defending champions, England. This seems like the moment of ODI World Cup. Well, I'm joined by Jamie Alter from the stadium itself. He will tell us what all happened there. Thank you so much, Jamie, for joining with us. How do you define this whole match? Nobody was expecting Afghanistan to defeat England. What happened there? Look, Surami, I think all weekend now, first, let's enjoy the fact that it, the World Cup hopefully now is a little open, right? Ab kya hai? Okay, let's get to your question. बहुत कम लोग ने सोचा होगा कि this team is going to be able to do it, okay? There were hardly any Afghanistan fans here. I tried to do a recce of some part of the ground. I probably covered one third. बहुत कम लोग actually expected this. This was supposed to be a demolition job by England because they were the defending champions here, okay? But now Yeah, look what Afghanistan have done. This is their biggest win in their one-day history to beat English, to beat the yeah, England team, to beat the defending champions. अब मजेदार ये बात है कि England now have lost 2 of 3 Suramiya. इनके पास 6 मैच है and they now have to win 5 of 6. Ahead is India, ahead is Australia, ahead is South Africa, ahead is Pakistan. Can you imagine England defending champions अगर World Cup semi-final तक नहीं पहुंचे? It will be one of the most I believe there are network issues. So I'm also joined with Chetan Narula and Animesh Nath. Chetan, how do you see this win of the Afghanistan side? I mean, nobody was expecting. I just started off this conversation on that note. Nobody ever expected Afghanistan to beat England, especially the way England were coming after that win against Bangladesh. No, absolutely not. And I think nobody was expecting a shocker at this stage, to be honest. It's just a marvelous. Let's just be very honest. It's a marvelous victory for Afghanistan. I'm writing my report alongside, and I'm just seeing that it's only their second win in World Cups. It's their first Yeah, win in ODIs against England. Only second yes, in World Cups, or fairly first one was Scotland, which came in 2015. So it's and it's a marvelous win. England have lost some shockers in the past. Bangladesh se 2015 mein haare the. That was considered its biggest low point. I think this is a bigger low point than that. They are defending champions. And yeah, अगर हम defending champions की बात करें तो personally मेरा belief ये है कि this is the second biggest upset in World Cup history. The first biggest upset was India beating 2 times champions West Indies in 1983. हम उस टाइम के इंडिया की बात कर रहे हैं. उस टाइम पे इंडिया अफगानिस्तान के दर्जे पे होती थी और इंग्लैंड के दर्जे पे वेस्ट इंडीज हुआ करते थे. ये yeah. चीज हम लोगों को आज रियलाइज नहीं होती है, लेकिन पहले भी एक टाइम ऐसा था. So from that perspective, I mean, wow, I think this is the second biggest upset in World Cup history. And Jamie's here. You should chat with him. Yeah. Yeah, Jamie, I believe you are back with us in this live. Jamie, Yeah, okay, guys. I've only moved 5 feet, लेकिन उस 5 feet में network आ गया तो let's do this while I can. Chetan knows where I'm standing. I've got a long way to go. I'm only at gate 6. I can go to gate 14 with my tripod to get network. So yeah, what's your question? Yeah, Jamie, tell us the vibe out there in the stadium, because I believe if there were England fans more, it'll be a deafening silence. But if there were Indian fans, I believe they must have enjoyed it. They're walking by, लोग चल रहे हैं, people are looking by, they're not saying much, but they're just happy कि उनको पैसा वसूल match मिल गया, right? Very few, I mean, there's probably 30-40 people I've seen walk by in the last 5 minutes wearing India jersey, लेकिन जो भी आ रहा है, एक तो लोग मुझे घूर रहे कि यार ये जरूर इसकी टीम हारी होगी, वो छोड़ो, but people are actually like, there's happiness on their face, they've got the match, 2 guys did this, had hard luck, इसकी there was a टीम इतनी network, बुरी तरीके से इसकी टीम इतनी बुरी तरीके से हारी है कि हिंदी बोलना शुरू हो गया. वही है तो लोग वही समझ रहे one guy but I'm saying people are walking back and let's look for a non-India match. Have you seen the Kotla crowd Sunday? मानता हूँ Sunday के दिन है. This was a very good crowd. You're not going to get this crowd. I will say it right now. You're not going to get this kind of crowd for a non-India match. Sunday का दिन है. But because the Kotla is so centrally located, and apparently fans, I've heard this from people inside the stadium, fans are actually much more happy with the Kotla. Traditionally, one of the most terrible grounds, जो सुविधा है, लोग खुश, people are walking by, they're waving because right now the World Cup is finally somewhat open also. Yeah.
Also, Jamie, tell us about Afghanistan team celebration. I believe वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे. They mustn't have even themselves expected this sort of बिल्कुल win. बिल्कुल. No, look, Chetan was there. It was 3 days ago that one of the journalists, towards the end of the press conference with Afghanistan coach Jonathan Trott, बेचारी उस journalist ने पूछा Trott से, आप तो यहाँ हार गए, अगला मैच इंग्लैंड है, how will you do it? It was not a demeaning question, but it came across, and Trott said, भाई, it's a game of cricket. Anyone can win, and I really want to get back inside to see कि आज Jonathan Trott का जवाब क्या होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि he knew they'd win. It's very tough, but one guy just said congratulations. I have nothing to do with England, but it's amazing. But look, the Afghanistan celebrations. I came for the live, but even on the pitch, like Chetan said, this is their biggest win and the second upset. उन लोग की जो खुशी थी and कितना फिटिंग है कि आखिरी विकेट किसने लिया? इनका first global cricket superstar Rashid Khan. I want to add one thing. One of the key facets of this win was that yes, Rashid got the last wicket, but when he first came on to bowl Suramiya, press box में हम लोग बोल रहे हैं राशिद इतना लेट करने क्यों आया? It was a rare day कि by the time Rashid came to bowl, his teammates had given him 4 wickets. When does Rashid Khan ever get that kind of cushion? So hats off to these guys. I hope इनके fans कुछ जो लोग आए हैं लाजपत नगर से जो अभी वहाँ पे, I hope they can enjoy because this is Afghanistan's cricket's biggest win ever. Yeah. You And can ask Jonathan Broad what did the English team do to him to, inspire बिल्कुल Afghanistan. बिल्कुल मैं वही पूछूंगा जाके यार. yeah, Jamie, also, where did this English side falter? Where do you see the loopholes in this match from their side? मैं अगर सच कहूं, इंग्लैंड नीड टू रियलाइज कि उनकी जो 2019 वनडे वर्ल्ड कप टीम थी वो अब ये टीम नहीं है. बहुत लेफ्ट ओवर्स हैं. They have firepower, but they've just landed in India not prepared for this World Cup, right? Mark Wood, Mark Wood was bad in the first match. He's come back. Chris Wokes and Sam Curran today were atrocious. Yes, Pata wicket tha, छोटे boundaries है. They bowled too many hit me balls. The captaincy today, Joss Butler, the captain, did not turn up. आप field placings देखें जब Sam Curran और Chris Wokes गंदी ball डाल रहे हैं. It was free boundary. Even after the power play, the gaps in the field were so visible. TV में आपको शायद दिखता नहीं, लेकिन press box से you could see the gaps and the hit me balls that the Pacers bowled. Now compare that to Fazal Hook Farooqi and what Naveen ul Haq did. इसी पिच पे जो पार्ट है जहाँ पे पिछले 2 चेसेस में बॉलिंग टीम ने कुछ नहीं किया. They were getting Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj like cut. Okay, England, I would have been okay. मेरा क्या इंग्लैंड से हारे जीते. I would have been okay had they perished trying to play their 400 type cricket. This was a somewhat confused. हम डिफेंसिव पे रहे या हम खेलें. If Harry Brook is your top scorer, right? कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग और आपकी एग्जीक्यूशन जरूर मार खाई. I would say some bad captaincy, some strange field placing, and just very poor bowling from the two fast bowlers. Livingston, this was the first time Livingston ever bowled 10 overs in a one-day match. He was outstanding. Yeah. Rashid's outstanding, but the Pacers really let them down today. Hmm. It seems that the hunger that they were talking about in Dharamshala, they didn't bring it along here in Delhi because English side was almost not there in this game any time of the day. Now, I have Jamie, to one stop you, more. Strum. I have to stop you. You were asking for Afghanistan fans. Take that! Here are two very happy, proud Afghanistan fans. Look at this. Afghanistan. Well done, guys. ये देखो, ये इतने खुश हैं ये भाई लोग. Look at them. Look at that. ये कह रहे हैं आपके लिए गुड लक नेक्स्ट. देखो, आपने कहा था अफगानिस्तान फैंस. ये देखिए. Uh, are they happy? Are they happy after Me. this win, Jamie? How happy they are? I'm Indian. I'm Indian. There you go, guys. देखिए, for you. Enjoy. Well done. Congratulations to चलिए. them. It's time to celebrate. They're saying congrats. Yes. हाँ, sorry. On cue, Yeah, on cue Jamie, they walk quickly by. So मैंने कहा next one, दिखाता and हूँ then मैं. I'll हाँ, हाँ, sorry. yeah, I'll let you go after this question. I believe this is a wholesome performance from the Afghanistan side because Gurbaz played well, 80 odd runs, and then the bowlers showed up today. So you find this as a team effort, and it seems that after that loss, they have come up with a good mindset, and they were all prepared to take on England, and now they'll be high on confidence to take on whichever team comes across them.
Bilkul. I mean, look, when you beat the defending champions by this massive margin, when you overcome the conditions, आपकी bowling कमजोर है, आपकी batting कमजोर है, but you get to 284. You've done something good. You've gone further than you got on this very ground against India. But for the bowlers, खासकर look, we know इनके spinners क्या कर सकते हैं. But Fazlul Farooqi and Naveen Ulaq bowling this kind of performance, Mohammad Nabi coming on bowling two sharp overs. When you watch someone like Nabi and Mujib from behind the bowler's arm, you get a sense कि ये लोग कितने accurate है. मुश्किल है इनका यहाँ से आगे. They have a lot of tougher teams. But जो इनका हौसला बड़ा होगा इस मैच से. Look at the match. There's a match against Australia. Is it Australia in Chennai? They're playing. Somewhere they're playing in Chennai, one of the top teams. जहाँ पे हल्की सी turning track होगी ना, this team's confidence will go through. It's a fantastic win, but again, let's be a bit more rational. इनका रास्ता बहुत बहुत मुश्किल है. But thank you to this team for at least giving us an upset in this overall rather one side. और ये मैच वैसे ये मैच भी one sided रहा, ठीक है? Just not the way we thought Yeah. it would be. Yeah, और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो गया. जेमी क्विकली ऑल्सो मुजीबुर रहमान प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं वो. ही इज क्वाइट हैप्पी. उन्होंने कहा कि हमने इसकी काफी ज्यादा तैयारी भी करी थी. हाउ Correct, गुड correct. ही वाज लुकिंग. वहां पर थे स्टेडियम में, तो कैसे लग रहे थे वो, एंड किस तरीके की लग रहा था कि प्लानिंग हुई है इस मैच को खेलने की. Look, I don't know how much planning it went in. अक्सर हर टीम प्लान करती है, but how often do they win, right? So if planning was going to be so important, they would have won the last match. लेकिन सबसे बड़ी बात इनका ये है कि the kind of accuracy he got, right? The scorecard says 51, but look at the wickets he got, right? He started the doubts along with the fast bowlers. So for three spinners, we all know कि अगर यहाँ पे कोई wicket लेगा, it will be Nabi, it will be Rashid, and it will be Mujib, right? But I want to put emphasis on those two fast bowlers. This was a Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj level performance on a track where very few people could have assumed कि ball ऐसी cut करेगी. Joss Butler was set up. He made him chase. He made him lead. Then he brought one in. भैया आप बाहर के बॉल के लिए खेल रहे हो, बॉल अंदर आई. So overall, yes, Mujib is the man of the match, but I think this was a really combined win by all of the Afghanistan fast bowlers. एंड जेमी विद यू आई बिलीव थोड़े कुछ इंडियन फैंस भी वहां पर जुड़े जो आपको अभी देख रहे हैं आपके साथ वहां पर. आई बिलीव कि वो आज एक अच्छा मैच विटनेस करने आए होंगे, और आज वर्ल्ड कप में जी. इतना अच्छा मैच उन्हें मिला है. सो a good match for all the cricket fans out there. And you rightly mentioned it can only happen in India, that in non-India matches we can see such Correct. huge crowd in the stadium. Thank you so much, Jamie. I'll leave you now because I know that you have to attend the press conferences as well. Thank you Yes, so much yes. for joining with us from Kotla. Thank you, Saramya. Thank you. Bye, guys. Bye, 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 bye. Bye. And I believe we also have Bansal Shah with us. Bansal has also joined us from the stadium. Bansal, quickly tell me, how do you see this win of the Afghanistan side? You were at the stadium. How did you find this whole win of the Afghanistan side? I think this is an amazing win for Afghanistan. Amazing win. I mean, they have been trying to do so hard. They've been working hard ever since they've come on the international stage, but they've not been able to win a match by in this manner at such a big stage at an ODI World Cup, and to beat the defending champions England. I can't imagine what it must be feeling, what the feeling must be amongst the players in the dressing room and back in their own country. Like they were hit with earthquake just last week or so, and now they are winning here with such a big margin. This has to be one of the best wins, one of the best cricket games ever. And yes, on that note, I must tell everyone that Mujibur Rahman, who has been awarded with Player of the Match after today's match, he has dedicated his award to all the people out there in Herat who were affected by the earthquake. A beautiful gesture by Right. him. He said that the win is dedicated to all those people who have suffered in that earthquake. But I believe this is a great performance by the Right. Afghanistan. I believe Yeah. almost all the players even donated their match fees to the people who were affected back in Afghanistan. And I think Rashid Khan donated all his match fees of Yeah. the entire World Cup to the people affected back in Afghanistan. So it has to be an amazing Yeah. gesture by the team players. Absolutely, it's an amazing gesture by them. It's a kind gesture by them, and I believe that the whole incident must have given them more energy to perform well and do well in this tournament, and that has been reflected today against England. But tell me about the England batters. They have always been talking about the baseball approach, that we will play baseball in ODI format, and regardless of the format, we will be keeping up that baseball show. Where was the baseball show today?
It didn't seem like anything like that today. Like they were trying to be aggressive till the end. Even after the ninth wicket fell down, Reece Copley was trying to smash boundaries every now and then, but none of them were able to stay at the crease for a longer time. Harry Brook did it for a while, but they couldn't extend it. They couldn't play till the end. None of the batters were able to do so. Yeah, one England made a very well mockery. said. They They actually have made a mockery. mockery today. Like they actually made a mockery today. None of them were able to stay in for a longer period of time. One or two players must have stayed there for a longer period of time, considering the target was not that easy and the pitch was doing tricks. It was supporting the spinners. It was doing tricks, so they should have stayed there, but none of them could. Yeah, I felt that none of them were in form today. लेकिन बंसल मुझे आप एक बात बताइए कि जब हैरी ब्रूक वहां पर खेल रहे थे एक बार के लिए तो लगा होगा ये इंग्लिश साइड ले जाएगी बिकॉज दे हैव दैट एक्सपीरियंस दे आर द डिफेंडिंग True. चैंपियंस आफ्टर ऑल. True, true. So, even after 5 or 6 wickets fell down, Harry Brook was still batting in the middle. And it was difficult to digest that Afghanistan is going to win this game. Afghanistan is going to win this game. The odds were turning in their favor with each and every over passing by, but it was difficult to digest that thing. And with Harry Brook batting out in the middle, there was a hope for England that he might be able to stretch it till the end. But once he got out, there was no hope for England. There was nothing for England. या एंड बंसल आप मुझे एक बार वाइब बताइए स्टेडियम में कैसा था. जेनी अभी बताकर Why? गए हैं कि बहुत सारे लोग आए थे बट यू टेल अस द वाइब आउट देयर जब ये इतना नेक टू नेक चल रहा था मैच. Vibe was amazing. बहुत ही ज़्यादा अच्छा vibe था. Like when Rashid Khan came to bat in, it seemed like someone like Virat Kohli or Rohit Sharma had come to bat in. The crowd was going berserk. They were like Rashid, Rashid, Rashid. As soon as he took the strike, and he immediately responded with a flurry of boundaries. दो तीन boundaries मारी उन्होंने आते ही. So crowd was till then the crowd was quite in a slumber क्योंकि अफगानिस्तान बहुत सारे wickets खो चुका था तब तक. And I'll tell you that the majority of the crowd was supporting Afghanistan. Very few England fans in the stadium here. अफगानिस्तान के बहुत सारे फैंस थे, उनके फ्लैग्स भी सब वेव कर रहे थे बहुत ज्यादा लोग. एंड with each and every wicket in the second innings, the crowd was going berserk. बहुत ज्यादा सपोर्ट था अफगानिस्तान के लिए. एंड जब वो जीता तब अलग ही माहौल था पूरा. बिल्कुल, अभी हमने थोड़े अफ़गानिस्तान सपोर्टर्स से भी बात करी थी बंसल एंड आई नो आपको जाना भी होगा लेकिन उससे पहले हाउ डू यू सी दिस इंग्लैंड साइड गोइंग अहेड इन दिस ओडीआई वर्ल्ड कप क्योंकि अब 2 हार मिल चुकी हैं. देयर आर द सेम प्लेटफॉर्म एज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैचेस हार चुकी है और सेम Right. विद तो जो टॉप कंटेंडर्स थे वो बैक सीट पर हैं अभी एंड इट फील्स कि इंग्लैंड के लिए अब आगे काफी मुश्किल होने वाला है, इजंट इट? इंग्लैंड के लिए डेफिनेटली मुश्किल होगा. इंग्लैंड के लिए आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो गेम्स हारी है वो काफ़ी अच्छे ओपोनेंट्स के सामने हारी है. इंग्लैंड इधर अफगानिस्तान के सामने हार चुकी है आज. उनको अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के सामने खेलना बाकी है. तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर देम. बट एट द सेम टाइम इंग्लैंड का ट्रेंड रहा है हर वर्ल्ड कप में ऐसी टीम से हारना. 2011 में आयरलैंड से हारा था, 15 में बांग्लादेश से हारा था, उसके बाद 19 में भी श्रीलंका से हारा था, उसके बाद जाके फाइनल्स में जीता था. तो it is still quite early to say anything what will happen going forward, but इधर से डेफिनेटली इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए. बिल्कुल द रोड अहेड इन दिस वर्ल्ड कप विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द इंग्लैंड टीम क्योंकि आज जिस तरीके से हारे किसी ने नहीं सोचा था. आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैचेस सो फार इन दिस वर्ल्ड कप. बंसल एक डेफिनेटली. और आप हमें चीजें बताइए कि वहां पर अब जब लोग जा रहे हैं सो दे आर रूटिंग फॉर अफगानिस्तान टीम जो इंडियन फैंस हैं और फॉर द इंग्लैंड टीम. Obviously the neutral fans were rooting for Afghanistan team. इंडियन फैंस जितने भी थे वो सारे अफगानिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे थे और काफी सारा सपोर्ट था अफगानिस्तान के लिए इन द स्टेडियम एज आई टोल्ड यू अर्लियर. तो इंग्लैंड के लिए बहुत ही कम सपोर्ट था, बहुत ही कम फैंस थे जो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे. वेल मुझे लगता है कि राशिद खान ने जितने भी आईपीएल के मैचेस खेले हैं उन्होंने अपने सपोर्टर्स बहुत बढ़ाए हैं तभी आज जो वर्ल्ड अनडाउटेडली कप. राशिद खान का फैंडम अलग लेवल पे था. गुरबाज इतने ज्यादा रन स्कोर कर रहे थे, मुजीब विकेट ले रहे थे, बट राशिद खान के क्रीज के आसपास आते ही द क्राउड वाज गोइंग लाउड एंड क्लियर लाइक एनीथिंग. Well, yes, we can absolutely get that because Afghanistan players का ये second home मान लीजिए. India has always been their home ground only in one way.
और सपोर्टर्स भी बहुत हैं. Thank you so much, Bansal, for joining with us live Thank on you, the thank RNG. you. You can join the pressers now. And now I have Chetan and Animesh with me. Chetan, it's a big win for the Afghanistan side. आप मुझे बताइए कि कितना मुश्किल होगा यहाँ से इंग्लैंड के लिए आगे जाना. बंसल ने ठीक बोला कि ये उनकी आदत रही है कि हर बार वो एक छोटी टीम से जरूर हारते हैं. इट हैज ऑलवेज बीन द ट्रेंड. बट डू यू थिंक सो कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना एक जरूरी बात बन जाती है एंड देन यू नो यू विल बाउंस बैक? बिकॉज आई डोंट फील सो. आई बिलीव इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड टू गो टू द बिजनेस एंड नाउ. No, I think it's still very early. बहुत ज्यादा जल्दी है. अभी 3 गेम हुए हैं. See, अगर एक ही टीम हार रही होती है ना, तो then you are going to say कि you can say कि okay, the late trend नहीं होगा. But now you look at the other teams. There are 3 teams which are यहाँ पे एक group बनता जा रहा है. There are 3 teams which are setting the pace, and I believe India, New Zealand will keep on winning. South Africa, एक दो ऐसे आएंगे hiccups उनके लिए, but they have won those initial games. They won a big game against Australia, which is going to help them. South Africa, Pakistan is going to be a huge game. South Africa, New Zealand is going to be a huge game. South Africa, Sri Lanka is going to be a huge game in that particular sense for their World Cup. अब उसके नीचे है पाकिस्तान, जो ना इधर है ना उधर है. उनको नहीं पता वो अभी किधर है कल की हार के बाद. सो वो अब हमें नेक्स्ट गेम में पता चलेगा कि कितना उन पे इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया से इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद. लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो 2 मैच हार गई थी और हम लोग बात कर रहे थे कि ये सेमीफाइनल नहीं पहुंचेंगे, सडनली इफ यू डू द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, देयर इज इंग्लैंड which has now lost 2 games out of 3. उन्होंने अभी तक सिर्फ बांग्लादेश को हराया है. एंड यू कैन अज्यूम कि ऑस्ट्रेलिया भी बांग्लादेश को हरा लेगा. इतनी बुरी हालत शायद नहीं हुई है उनकी अभी. You can assume that. So England and Australia are on the same level pegging at the moment. अगर आप assume करके चलो कि Australia can beat Bangladesh, so I can't say कि this is that they are out of the semi-final reckoning, but I will say this कि this is going to go for the 4th spot and potentially for the 3rd spot. It is going to go very late. हाँ, इससे matches बहुत interesting होते जाएंगे. Australia needs to beat 5 out of the big 6 match. They need to win 5 out of the big 6 matches. England needs to 7 matches. England needs to win at least 5 out of 6 of their remaining matches. और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, उन्होंने पाकिस्तान को खेलना है. Something tells me England Pakistan है penultimate day of the league stage. उस दिन Australia is playing. I think Australia is playing. Australia's last match is against Afghanistan. Yes. So उस दिन day game में Australia is playing Afghanistan, and evening afternoon game में England and Pakistan are playing at Kolkata on November 11. Something tells me England Pakistan is going to decide the 4th semi-finalist on November 11. ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ. October 15. Well, I'll take a word on this 15th of October, and we'll get back to it on 11th of November, almost a month later. I think we should congratulate our friend who's joined us from Afghanistan. Congratulations आपको इतनी जबरदस्त जीत. I mean, your team has won. Congratulations to you. Such a great win, and according to me, it is the second biggest upset in World Cup history. World Cups that started in 1975. Congratulations to Afghanistan. It was a memorable win for them. Yes, all the Afghanistan cricketers, and I believe all the people there in Afghanistan will remember this win for a long time. And I'll again repeat myself, it's a wholesome win for the Afghanistan side. Animesh, देखिए स्टार्ट अगर हम करें तो गुरबाज ने अच्छी शुरुआत करी थी बैटिंग में, और उसके बाद जब हम पूरे लाइनअप को देखते हैं सो इब्राहिम जदरान ने 28 रन वहां पर बनाए. बट यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो अभी भी कंटिन्यूड है, क्योंकि आपके विकेट्स वहां पर गिरे हैं. रहमत शाह, शाहिदी, सब लोगों ने रन्स नहीं बनाए हैं. बट दोस 1 or 2 परफॉर्मेंसेस वर क्वाइट इनफ फॉर अफगानिस्तान टू टेक देम टू 284. और उसके बाद जो बॉलिंग स्ट्रेंथ मानी जाती है अफगानिस्तान साइड की, दे केम अप एंड दे डिड देयर बेस्ट इन टुडेज मैच. सो आई फील कि पूरा एक होलसम विन है. हाउ डू यू सी दिस विन फॉर द अफगानिस्तान साइड, और स्पेशली अब आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं, तो किस तरीके का जोश रहेगा इस पूरी टीम में?
ये इस मैच ने सबके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस और जितनी प्रेडिक्शंस थी सबको एक तगड़ा झटका दे दिया है कि सेमीफाइनलिस्ट कौन होगा क्या होगा। हालांकि अभी बहुत मैचेस बाकी हैं, उस हिसाब से बिल्कुल। चीजें अभी भी फेवर में जा सकती हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने जो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं बड़ा धक्का दिया है इंग्लैंड टीम को, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस थे, वो खेल रहे थे आज का मैच। और सबसे बड़ी बात है, जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, तब यही लग रहा था कि अफगानिस्तान को जल्दी से समेट के ये मैच जल्दी से रैप अप हो जाएगा। लेकिन इंग्लैंड इतनी जल्दी रैप अप हो जाएगी इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि वो बोल्ड आउट हो जाएंगे। और ये एक मतलब कह सकते हैं बहुत सरप्राइज एलिमेंट था आज के मैच में। और जिस तरह की जीत मिली है ये बहुत बड़ी जीत थी। और क्योंकि देखिए जितने भी उनके प्रेडिक्शंस थे, खासकर जॉस बटलर ने मेरे हिसाब से सोचा कि ड्यू फैक्टर काम करेगा उनके लिए, इसीलिए उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, अफगानिस्तान के पास कहीं ना कहीं वो मिडिल ऑर्डर क्रश है, अभी भी उस चीज से परेशान है। लेकिन इकराम ने अगर अच्छी पारी खेली, जो कहीं ना कहीं आखिरी में टच मिलना चाहिए था वो मिला। हालांकि तब भी मैं कह रहा था कि जिस तरह से कोटला की पिच थी उस हिसाब से ये स्कोर और बड़ा हो सकता था, अफगानिस्तान अपना रन रेट और अप कर सकता था। हमने प्री मैच में इस बारे में बात की थी, मिड इनिंग्स में इस बारे में बात की थी। लेकिन फिर भी जो प्रेडिक्शंस थे हमारे कि ये टोटल डिफेंड कर पाएगा अफगानिस्तान या नहीं कर पाएगा, उन्होंने सबको चौंका दिया है। खासकर स्पिनर्स जो बिल्कुल भी उनके आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, खासकर राशिद खान या मुजीबुर रहमान, दोनों ने उतना अच्छा करके नहीं दिखाया था पिछले कुछ मैचेस में, चाहे वो वर्ल्ड कप का पिछला मुकाबला हो इंडिया के खिलाफ, उससे पहले भी जो कुछ मुकाबले उन्होंने खेले। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ी जीत है। और उस हिसाब से अफगानिस्तान बिल्कुल इस जीत को मतलब उनको अच्छे से सेलिब्रेट भी करना चाहिए, क्योंकि ये जीत शायद ही, आप जैसे चेतन ने कहा, वर्ल्ड कप हिस्ट्री में एक सेकंड कह सकते हैं कि सेकंड ऐसी विन है जो उनको काफी परेशान करेगी आज इंग्लैंड को। और मेरे हिसाब से ये जीत को बहुत सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। और इस हिसाब से क्योंकि ये एक पहला कह सकते हैं कि पहली ऐसी जीत है जो पूरे वर्ल्ड कप का रुख बदलने का मादा रखती है। बिल्कुल। और अनिमेश, हम बहुत दिनों से, जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से बात कर रहे थे कि हमें कोई तो ऐसा मैच मिले जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हो। सब वन साइडेड गेम्स हो रहे थे, बट एक हमने कल राइवलरी देखी थी इंडिया पाकिस्तान, जहां पर इंडिया ने बहुत कंफर्टेबली वो मैच जीता। आज सब लोग सोच रहे थे कि अच्छा चलो थोड़ा सा लो की डे है, आज तो अफगानिस्तान इंग्लैंड है, इंग्लैंड जीत जाएगी, लेकिन अफगानिस्तान ने बताया है कि बॉस वी आर हियर टू प्ले, वी आर हियर टू विन। Chetan, I believe this win will bring grander things for the Afghanistan side, and it will become an inspiration for the generation to follow. Definitely, there's no doubt about it. क्योंकि जब आप कैसे इंस्पायर करते हो यंगस्टर्स को? अगर हम लोग अपनी बात करें, हम लोग कैसे इंस्पायर हुए थे गेम्स को देखने के लिए? This is a country which is going through really troublesome times, and this is a major relief for them. And I hope they're watching. I hope they're seeing what has happened, and it inspires people, Afghan people around the world. A lot of them are refugees. A lot of them are living displaced. It inspires them to take up the sport because probably sport can give them some respite. A lot of these Afghanistan team members, they are from refugee camps in the north of Pakistan and the Pakistan-Afghanistan border, and now sport has uplifted their lives. Sport has given them a reason to smile, and they are world superstars, world-renowned superstars. So I'm hoping a lot of Afghanistan youngsters are watching this, and they can see that yes, their country is suffering a lot at the moment, but there is more to life, and they can find some they can find some respite from the hardships of life with this victory. At the same time, the youngsters who feel they can take up this sport and improve their lives, I hope it inspires them. Yes, it's a big win not only for the team. You're right, Chetan. It's a big win for the country. Whenever it's about Afghanistan, Afghanistan deal with a lot of things. And I was just telling how Mujibur Rahman has dedicated his win, and a lot of Afghanistan players have dedicated their match fee to the people who have suffered in earthquake back in the country. Animesh, ये बहुत बड़ी जीत है अफगानिस्तान प्लेयर्स के लिए भी, लेकिन हम बात करें अफगानिस्तान प्लेयर्स की तो मुझे लगता है कि वो थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे मैचेस खेलते हैं। आप अफगानिस्तान प्लेयर्स को देख लीजिए, वो सारी फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग्स में हिस्सा लेते हैं। इस साल जिम T10 शुरू हुआ, उसमें गुरबाज थे और बहुत सारे अफगानिस्तान क्रिकेटर्स थे। आपको लगता है कि वो पार्टिसिपेशन हर लीग में,
हर टूर्नामेंट में जितने भी बायलैटरल सीरीज अगर हो रही है या कोई फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग्स हो रही है, वो पार्टिसिपेशन ने अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको काफी कॉन्फिडेंस दिया है और आज वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि वो इंग्लैंड को हरा सके। बिल्कुल, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये, इसलिए भी है कि देखिए जितना जेमी ने बताया और अभी बंसल हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि एक फैंडम क्रिएट हुआ है इंडिया में। वो बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है कि आपका कितना फैन फॉलोइंग है, आप कितना अच्छा एक पॉजिटिव फील करते हैं इस कंट्री में आके। और खासकर देखिए गुरबाज पर आप नजर डालें, केकेआर के ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं, तो वो एक कहते हैं इंडियन टर्फ पे खेलने का उनको एक एक्सपीरियंस मिल गया है। और जितने भी अफगान बॉलर्स या बैटर्स आप देखेंगे, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको प्लेइंग 11 तक में हिस्सा मिल रहा है। कहीं ना कहीं आईपीएल की कई सारी टीमें जो अफगान बिल्कुल। प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में मौका देती हैं, तो ये उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। एक प्लेयर बड़ा होता है लेकिन उसको एक फीलिंग जब मिल जाती है कि हाँ वो बड़े मैचेस खेलने का मादा रखता है और वो बड़े मैच जिताने का भी मादा रखता है, तो ये टीम उन ऐसे कुछ खिलाड़ियों से भरी हुई है। और उनके साथ साथ कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस दिखाती है कि उनका जो फैंस से जो उनको प्यार मिल रहा है, वो उसी तरीके से परफॉर्म करके कहीं ना कहीं उन फैंस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अफगानिस्तान ने यहाँ पे काफी प्रैक्टिस भी की है एज ए नेशनल टीम भी, एज एन यस। इंटरनेशनल टीम भी, फिर उसका भी बहुत यस। फायदा मिलता है कि यस। उन्हें इंडियन पिचेस का काफी कह सकते हैं एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक। तो ये एक बड़ी जीत उनके लिए इस मायने में भी है कि उन्होंने ये जो करके दिखाया है, उसमें कई लीग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनको वो एक्सपीरियंस का जो कह सकते हैं बेस तैयार करके दिया है। वो चाहे आईपीएल जैसी लीग है और भी जो मैचेस वो यहाँ इंडियन टर्फ पे खेलते हैं, वो उसी का कह सकते हैं कि एक रिजल्ट हम देखने को पा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अफ़गानिस्तान जिस तरह से पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करती थी इंडिया में, वो उनको एडवांटेज में रहा होगा आज के मैच में और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, वो बाकी बहुत सारी लीग्स खेलते हैं। लेकिन चेतन, एक चीज़ इंग्लैंड के बारे में आई वुड लाइक टू नो। इंग्लैंड बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट में आने से पहले दैट दे आर ऑल सेट फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप, बट इफ यू सी ऑल देयर प्लेयर्स, दे हैवंट प्लेड ओडीआई cricket that much in the last 4 years, especially after that 2019 win. Do you think that lack of experience in this ODI format is taking them to such kind of losses? Yeah, they were busy saving Test cricket. तो फिर से ODI cricket खो गया उनका. हाँ. No, jokes apart, I think there's a lot of international cricket being played, and 4 years. अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि not everybody concentrates on all formats. You're not building to the next World Cup immediately. 2015 के बाद England started building towards 2019 immediately, and which is the reason. And they won the World Cup, but obviously New Zealand didn't lose it. But what my point is, they won the World Cup, and I think it feels like they hit a restart button, they hit a refresh button, and from that perspective, they were उस हिसाब से अगर आप देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ कंपेयर करते हैं जिन्होंने 3 बैक टू बैक जीते, जो प्लेयर्स थे वो वही एनर्जी, वही मोमेंटम जो है, वही एनर्जी जो है अगले टूर्नामेंट्स में लेकर चले गए, एंड फ्रॉम दैट you could spring new results. लेकिन ये इंग्लिश टीम जो है ऐसे लगता है जैसे they are restarting, they're starting afresh. Josh Butler is not looking very inspirational, which is very, very surprising because he's a terrific cricketer, one of my favorite cricketers, and I think England needs to regroup. They need to figure out. I think उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो जो slam bang करते रहते हैं, it does not work all the time. There has to be a moment जहाँ पे उन्हें pause लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं. Does their bowling work? No, I don't think so. Their bowling doesn't work. You can't play Chris Woakes and Mark Wood in the same playing 11. These are two bowlers who bowl back of length. और हैरिस रॉफ की भी हमने इतनी पिटाई होते देखी है, सिराज की भी कितनी पिटाई हुई है बैक ऑफ लेंथ. जो बैक ऑफ लेंथ बॉलर्स हैं वो इन पिचेस पे दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, एंड इंग्लैंड इज प्लेइंग 2 ऑफ देम. So I think they need to figure out. Jofra Archer is a huge miss. He played such a pivotal role in their last World Cup campaign. So जैसे जेमी ने कहा था कि they haven't, और इंग्लैंड को इंडिया में खेले हुए 2 साल हो गए. So they haven't had a lot of practice in these conditions. They just got off bed and they मतलब Ashes के बाद उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर बेड से उठे और उन्होंने कहा कि चलो एक ODI सीरीज खेलते हैं, और फिर इंडिया पहुंच गए. And their warm-ups were washed out. Yeah, एक और चीज भी है, and quickly over there,
what is happening with Ben Stokes? This was the third match, right? He didn't play in the third match. Now, आपने अपना retirement announce किया. Okay, you found out कि ODI World Cup है, so you came out of the retirement, which has always been the case with the English cricketers. They announce something, then they come back from their statements, and then they do it. So he came back from that retirement. He joined the squad. आप फिट नहीं थे, आप फिट नहीं है, और आप अभी भी टीम के साथ है. डोंट यू थिंक इट इज लाइक किलिंग वन गुड स्पॉट ऑफ योर टीम? In a way, yes. Lekin I think the bigger, देखो, when a player, it was always, I think it was always in the cards कि Ben Stokes was going to come back from retirement for the World Cup. उन्होंने रिटायरमेंट शायद इसीलिए ली थी बिकॉज ही वांटेड टू कंसंट्रेट ऑन टेस्ट क्रिकेट एंड नॉट प्ले द वाइट बॉल फॉर्मेट्स एज मच. उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला, वो जिता दिया. सो आई थिंक ही वांटेड दैट ब्रेक, दैट मेंटल ब्रेक. दैट वाज द रीजन फॉर हिज रिटायरमेंट, बट ही वाज ऑलवेज गोइंग टू कम बैक. उसमें कोई डाउट नहीं था. द फैक्ट दैट ही प्लेड द IPL विद CSK, अगर उन्हें वाइट बॉल नहीं खेलना होता तो वो वहां नहीं जाते, वो अगले साल चले जाते, या जब उनकी टेस्ट कैप्टनसी खत्म हो जाती तब चले जाते. द फैक्ट दैट ही वेंट देयर वाज indicator enough that he was planning to come back and play ODI cricket. I think the bigger problem is that they left somebody like a Jason Roy back. That for me is a bigger problem. Alex Hales ko piche chhodna, that was a problem. Alex Hales retirement le liya. Alex Hales was a major component of them winning the T20 World Cup. Jason Roy wasn't fit. He had those multiple back spasms problem in the month of September. No. Jason Roy made space for Harry Brook in the last final जब squad selection हुआ है. Jason Roy को उन्होंने हटा के but they also got Dawid Malan in place of him, na? Dawid Malan. I'm not saying कि Dawid Malan is a wrong thing. I'm just saying कि आपके पास दो accumulator हैं. England and Australia are suffering from the same problems. Australia के पास भी दो accumulator हैं इस time पे, Marnus Labuschagne और Steve Smith. Two accumulators in the same batting lineup don't work, especially in these conditions. They just don't work. I'm not saying कि उनको Jason Roy को लेके ही आना चाहिए था. Alex Hales could have been an option. वो retire हो गए क्योंकि उनको snub करा गया दोबारा से. After the T20 World Cup, he should have been brought into the ODI fold, keeping this World Cup in mind. He was brilliant in that T20 World Cup. He's a phenomenal white ball opener. Yes. So थोड़े से पुराने प्लेयर्स और थोड़ा सा फ्रेश ब्लड, जो फ्रेश ब्लड वो लेकर आए हैं, इज दैट गुड इनफ? आई एम नॉट श्योर. इंग्लैंड, देखो, इंग्लैंड इन दिस वर्ल्ड कप नेवर केम एज द इंग्लैंड फ्रॉम 2015, sorry, 2019. No, they did not. This was a fresh England, but was it fresh enough to carry the inspiration from 2019? No. So अच्छा, और स्टोक्स के ऊपर मैं एक बात बता दूं, जहां तक मेरे को सुनने में आया है, स्टोक्स आज के गेम के लिए फिट थे. एंड ही इज जस्ट बीन रेस्टेड की probably over confidence में. This is a good line that Jason has written this. Probably they didn't need Ben Stokes and give him rest before the next game. What is their next game? I think their next game is a bigger one. So from that perspective, I think England were like, I may be wrong because I didn't go to the ground today, but from my understanding, I think Ben Stokes could have played today's game, but England's next match is up against South Africa. It'll be quite interesting. So they were actually picking Ben Stokes to play that game. और अब तो उन्हें खेलना ही पड़ेगा, अब तो एक टांग पर खेलना पड़ेगा. So let's see what happens. I mean, this was crazy. Yeah, actually it's crazy for the England team, but I think it's a really joyous moment for the Afghanistan side. बहुत बड़ी जीत है अफगानिस्तान के लिए and much needed. आप अफगानिस्तान टीम को देख लीजिए, उन्होंने पिछले बहुत सारे टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा खेला है. अनिमेश, लास्टली एशिया कप के बारे में बात करें हम अफगानिस्तान टीम की, वो एक आई वुड से कि एक मैनेजमेंट की तरफ से जो कि कैलकुलेशन एरर था, उस वजह से अफगानिस्तान नहीं पहुंची. अदरवाइज वो पहुंच सकते थे लास्ट स्टेजेस में. अब बाकी कोई भी टूर्नामेंट ले लीजिए, अफगानिस्तान हैव ऑलवेज बीन दैट साइड जिन्होंने बहुत क्लोज मैचेस खेले हों, बी इट अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान और एनी अदर मैच. सो इस टीम में वो एक कैलिबर है और आगे जाने के लिए मुझे लगता है कि ये टीम अब काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड होगी टू फेस बिगर टीम्स, इजंट इट? बिल्कुल. एशिया कप में वो
बहुत परेशान भी हुए थे कि उनको वो आइडिया ही नहीं था कि उनको कितने रन बनाने हैं, या वो मैसेज कहीं ना कहीं उनको ड्रेसिंग रूम से नहीं मिला था। वो बाद में भी काफी इसको लेकर इशू क्रिएट हुआ, और राशिद खान उस समय भी क्रीज पे थे, आज हमारी स्क्रीन पे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और बहुत अच्छा बूस्टअप मिला होगा आज अफगानिस्तान की टीम को, क्योंकि अभी बहुत बड़ा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, लगभग 7 मैचेस अभी भी टीम को खेलने हैं, और वहां पर ये किसी के लिए भी स्पॉइलर बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप वो जर्नी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि हर वर्ल्ड कप में स्पॉइलर बनने से अच्छा है कुछ आगे बढ़कर आए। तो मुझे लगता है ठीक है, अच्छा बूस्टअप मिला होगा, एक अच्छा पॉजिटिव नोट पे आज से आगे बढ़ेंगे, और मैच जीत के वो वर्ल्ड चैंपियंस को हरा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव नोट जरूर मानने में आता है कि हाँ, हम किसी टीम से भी आगे जाके अच्छे से भिड़ सकते हैं। Yes. And on that note, I believe it's a great win for the Afghanistan side, and they will have to face New Zealand now. It'll be a big game for the Afghanistan side. So Afghanistan Big versus game New for New Zealand. Zealand. It's a big game for New Zealand. Chennai में ये 3 spinner. Yes. And I think New Zealand's credentials will be tested. और अब तो केन विलियमसन फिर से बाहर हो गए हैं. So Yes. New Zealand will be But tested. before that, Chetan, prep yourself for Australia versus Sri Lanka tomorrow. We'll meet you then talking about that game, because it's a big game for both the sides. They've been coming up with those losses in this tournament. It's going to be a big game, and especially how Afghanistan have defeated England in today's match. Australia will be looking forward to what will happen to them against Sri Lanka in Lucknow. So Australia is 10th at the moment. That doesn't really happen often. yeah, and Sri Lanka, they also have a lot of problems out there. Dasan Shanaka will not be leading the side, and a lot of changes there. Well, we'll talk about that game tomorrow when it will begin. Thank you so much, Chetan and Animesh, for joining with me, and thank you so much, everyone, for joining with us, and congratulations to Afghanistan.